Very good morning, students. I hope that you all are well at your homes. So let's start our English class. Open page number 102, chapter 9, The Lost Camel. Today we'll start a new chapter of our term PT2 portion, which is The Lost Camel, chapter 9. As you can see on your screen over here. So this is the chapter Lost Camel, and this chapter is about a wise person. A wise person is one who observes things around him or her. Let's read about four merchants who used their thinking power and became the Raja's minister. So here in this chapter में हम लोग four wise persons के बारे में जानेंगे who use their thinking power, जो अपने thinking के power को use करते हैं, means सोचने की शक्ति उसको यूज करते हैं एंड दे बिकेम द राजा's मिनिस्टर, मतलब वो राजा के मिनिस्टर बन जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट पावर. सो डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइज? रेज योर हैंड. वाइज मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइज? ओके, लेट मी टेल यू. वाइज मीन्स होता है इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, होशियार. वाइज मीन्स, understand, W-I-S-E, wise means intelligent, buddhiman, होशियार. As you can see the word over here, wise. Wise person means बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो कौन होते हैं? ऐसे होते हैं वो observe things around him and her. मतलब जो हमारे आसपास जो चीजें चलती हैं, जो चीजें हो रही हैं, we have to observe करते रहना चाहिए कि कौन सी चीज किस तरह से वर्क कर रही है ना, कौन सा काम कैसे हो रहा है, लाइक कैसे फंक्शंस, कोई भी चीज के फंक्शंस कैसे काम करते हैं. हैव यू एवर थिंक अबाउट दैट दीज थिंग्स, लाइक सूरज इतना तेज क्यों चमकता है? व्हाई इज सन सो शाइन सो ब्राइट? Why are at the night time all the stars comes and in the daytime where they went, we cannot find out. कहाँ चले जाते हैं, कहाँ गए वो? We cannot find out that कि वो stars रात में कहाँ चले जाते हैं. Have you ever find out that? So you should have to think about all these things which are going on, which are happening around you. Understand? Then you will become a wise person. So everybody should have to think about all these things कि आपके आसपास क्या-क्या चीजें हो रही हैं. You have to observe all these things. So let's find out that how the village headman helps him to find the thief. A kingdom in the India. So who will read this chapter? Somebody have to read this chapter. Yes, Yashwan, start reading the chapter. A kingdom in India, four merchants standing on the Street and talk street. Yes. And talking, a man see them and come to talk to them. The man looks worried. Man, kind sir, I am in great trouble. I have lost my camel. Have you seen it anywhere? First merchant, is one of his leg weak? Man, yes. Second merchant, he is right eye sightless. Man, yes, you have right. He can see with the right eye. Third merchant, is his tail short? Man, yes, my animal has a short tail. First merchant, he's suffering for body pain. Man, yes, you have described my poor animal exactly. Where is you the first merchant? We have known. Yashwant, stop. Rishika, start reading.
Everyone should have to look into their books. Understand? I can ask anyone to read the chapter. Then you will not say that मैम मुझे पता ही नहीं that कहाँ से start करना है, कहाँ पर था. Look into your book. That where everybody is reading. जो भी पढ़ रहा है वो कहाँ पढ़ रहा है. You should have to look into your book. Yes, Rishika, do you know where from where you have to start? We have not started. In fact, we have not even seen it. We have only seen its footprints. Man, you lie. Lie. You Not lie. It's lie. You lie. You lie. You have stolen my camel. How can you describe it so well without Seeing. Seeing it. Raja? What brings you here? Man, oh Raja, these 4 men have stolen my camel. Please order them to return it. Second merchant, Your Highness, we have not stolen the animal. In fact, we have not even seen the animal. So how can we steal it? Raja, how do you know that they have stolen your animal? Man, oh Raja, they have described my camel exactly. If they have not seen it, how can they do so? Raja, if you have stolen the animal, I order you to return it. Third merchant, oh Lord, if we had the animal, we would return it, but we do not have the animal. We are honest men, Stop. not Alka, start reading. not leave Raja. Then how do you command so much about the animal? Third merchant, believe us, Raja. We have not seen the animal. We only learn about the animal for his footprints. Raja, how can that be? First merchant, you see my louder. I noticed footprint of an animal on the muddy path. I observed that I observed that. I observed that one footprint. I was looking them the rest. I can that I knew. that It's new. I knew that the camel had one weak leg. Stop. Diksha, start reading. From where Alka stopped, start from there. Second merchant, Yes. Observe. Observed. Start reading. observed the leaf of trees on the left side of the road Were eaten. were eaten. Those on the right were Untouched. untouched. I knew
I knew he clouds see with He couldn't see. he couldn't see with his right eye. Stop. Ghulam Ansari, start reading. Do you know from where you have to start? Third merchant, I saw drops of blood on the road from small insect bites. So I knew that his tail was too short to chase away insects. Yes, stop. Ayush, start from where Ghulam. Was to so to chase away insect food merchant. I saw that while his hind feet were plant firmly on the ground. The hind feet had hardly touched it. Thus, I guessed that they were consonant contracted by pain in the Camel's body. Stop. Diviraj, start reading. From where Ayush stopped, start reading from there. Okay, ma'am. Raja, these matches are very big. They have Wise. These merchants are very wise. very wide. They have observed things around them and Drawn. Conclusion. Yes. They are hot. They are honest. Too. I am happy that I have SUCH. I have such wise men. Men in my kingdom have for you. Look at the man. I want you to be confused. Careful. Next time I order you to go and look for your client. Looking at the for matching and I make you my Ministers. Minister with you help. I am going to rule the kingdom. Very good.
How many of you left for reading? कितने बच्चों ने रीडिंग नहीं की है? Raise your hands. Aradhya Soni. Only Aradhya Soni has not done reading. Everybody had done reading. सबने रीडिंग कर ली है. Who is left? Ma'am, I have tomorrow night reading and today morning reading. Good. Aradhya, start reading from the chapter. Ma'am, गुलाम हसन ने reading नहीं की है. Start reading from the chapter. Yes, ma'am. Mankind that I am in greater trouble. I have lost my pen. Have you seen it anywhere? Husband message. I word is not of this. Yes. We. Ma. Yes. Second, my kid. Second merchant. It's merchant. Second merchant. Second merchant is have Is singular man is you are right. He okay. cannot. Stop, Aradhya. Diksha Gautam, start reading from where Aradhya stopped. Diksha, you are not audible. Mansha, on your camera, Mansha. Start reading from where Aradhya stopped. Diksha, you are not audible. Mansha, start reading. मैम कहाँ से? क्या कहाँ से? आपको बोला था ना बेटा, you should have to look into your book. So students, let me explain this story in front of you all. Let's explain this story. And अब इस story को आप लोग समझिए that what is happening in this story. So here you can see there are 4 merchants are standing. What is the meaning of merchant? Do you know that? Who can tell me? Raise your hand. Yes. Yashwant, tell me the meaning of merchant. Ma'am, merchant means just ma'am vyapari, ma'am Yes. shopkeeper. Yes, you can say businessman, vyapari, shopkeeper. Merchant means. Understand? So here you can see 4 merchants are standing. 4 vyapari है, 4 businessman है, वो खड़े हैं यहाँ पे. In a kingdom in India, 4 merchants are standing on a street. एक street में वो खड़े हैं and talking. They are talking to each other. A man sees them and comes to talk to them. The man looks worried. एक आदमी आता है and वो बोलता है, कुछ बात करना चाहता है and वो बहुत worried दिखता है. Means वो बहुत चिंता में दिखता है, परेशान दिखता है. So what he is saying? Let's find out. Man is saying that, kind sirs, I am in great trouble. I have lost my camel. Have you seen it anywhere? So he is saying that कि sir, मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ. I have lost my camel. मैंने अपना ऊंट, camel means ऊंट, मैंने अपना ऊंट को खो दिया है, मेरा ऊंट खो गया है. So क्या आपने उसको कहीं देखा है आसपास? Then first merchant is thinking for some time.
फर्स्ट मर्चेंट जो होता है वो थोड़ी देर सोचता है. देन ही इज सेइंग दैट इज वन ऑफ हिज लेग इज वीक. क्या उसका एक लेग वीक है? फर्स्ट मर्चेंट बोलता है. ओके, डू नॉट टच द स्क्रीन. हु इज टचिंग द स्क्रीन? प्लीज डू नॉट टच द स्क्रीन. Man is saying yes. Then second merchant is saying, is his right eye sightless? क्या उसकी जो right eye है उससे उसको दिखाई नहीं देता है properly? Then man is saying, yes, yes, you are right. He can't see with his right eye. वो अपनी right eye से नहीं देख सकता है. Then third merchant is saying, कि is his tail short? क्या उसकी जो पूंछ है वो छोटी है? Then man is लुकिंग शॉक्ड. मैन बहुत शॉक्ड हो गया था. इनको सब कैसे पता है मेरे ऊंट के बारे में अगर इन्होंने नहीं देखा है तो. Then man is saying yes, my animal has short tail. Then fourth merchant is saying that is he suffering from body pain? क्या उसकी बॉडी में दर्द है कहीं पर? फोर्थ मर्चेंट ने कहा. Then man in excitement, yes, yes, you have described my poor animal exactly. आपने तो मेरे एनिमल के बारे में एकदम सही बताया, एकदम करेक्ट बताया है. And he was thinking, थोड़ी देर रुकता है and सोचता है that Diksha, do not touch the screen. Then he was thinking for a while, थोड़ी देर सोचता है and he is asking to them कि where is he, you thieves? आप सब लोगों ने मेरे एनिमल को चोरी कर लिया है, स्टील कर लिया है. Where is he? कहाँ है मेरा एनिमल? Then first merchant is saying, we have not stolen your animal. हम लोगों ने आपके एनिमल को स्टोल नहीं किया है, चोरी नहीं किया है. In fact, you have not even seen it. We have not even seen it. हमने तो उसको देखा भी नहीं है कि कहाँ है वो. We have only seen its footprint. हमने तो उसको अभी तक देखा ही नहीं है. हमने सिर्फ उसके फुटप्रिंट्स देखे हैं. हमने उसके पैरों के निशान देखे हैं, उसके निशान देखे हैं कहाँ से वो गुजरा है. Then man is saying, you lie. तुम लोग झूठ बोल रहे हो. You have stolen my camel. आप सब ने मेरे कैमल को स्टोल कर लिया, चोरी कर लिया है. अगर आपने स्टोल नहीं किया है, अगर आपने नहीं चोरी किया, अगर आपने स्टील नहीं किया है, तो आप लोग एग्जैक्टली कैसे बता रहे हो सब चीजें कि उसका एक आंख से उसको दिखाई नहीं देता है प्रॉपर्ली, उसको बॉडी पेन है एंड उसकी शॉर्ट टेल है. हाउ कैन यू डिस्क्राइब इट सो वेल विदाउट सीइंग? बिना देखे आप इतने अच्छे से कैसे बता रहे हो? कम नाउ टू द राजा. The man said कि चलो अब राजा के पास ले चलता हूँ तुम सबको, मेरा कैमल दिलाओ तुम लोग. Then the man takes them to राजा. राजा के पास मैन उनको ले जाता है. The राजा is sitting on the throne, looking talking with his courtiers. राजा अपने throne में बैठा रहता है and he was talking to his courtiers. What he was asking, then राजा is saying, what brings you here? आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर, कैसे आए हैं यहाँ पर, किस कारण से आए हैं? राजा ने पूछा. Then man said, oh Raja, these 4 men have stolen my camel. Please order them to return it. Man कहता है, राजा, इन लोगों ने, ये चारों जो मैन हैं, इन लोगों ने मेरे एनिमल को, मेरे कैमल को स्टील कर लिया है, रख लिया है अपने पास. इनसे बोलिए कि वो मुझे वापस लौटाए. सेकेंड मर्चेंट ने बोला, योर हाइनेस, वी हैव नॉट स्टोलन द एनिमल. राजा जी, हम लोगों ने इनके एनिमल को स्टील नहीं किया है, नहीं चुराया है. इनफैक्ट we have not even seen the animal, so how can we steal? असली इनफैक्ट सही बताएं तो हमने तो इसके एनिमल को अभी देखा भी नहीं है कि वो कैसा है, कहाँ है. Then राजा said to the man, how do you know that they have stolen your animal? राजा ने कहा कि आपको कैसे पता कि इन लोगों ने आपके एनिमल को स्टील किया है, चोरी कर लिया है. Then man said, oh राजा, they have described my animal exactly. उसने कहा, मैन ने, कि राजा जी, इन लोगों ने मेरे एनिमल के बारे में एकदम एग्जैक्ट बातें बताई हैं, करेक्ट बातें. If they have not seen it, how can they do so? अगर उन लोगों ने नहीं देखा है तो ये ऐसे कैसे बता सकते हैं exactly? Then Raja is saying, if you have stolen the animal, I order it to return. राजा ने कहा कि अगर तुम चारों ने, मर्चेंट से कहा, जितने मर्चेंट थे उनसे कहा राजा ने कि अगर आप चारों ने इनके एनिमल को स्टील किया है तो वापस करो जल्दी, रिटर्न इट. Then third merchant said, oh Lord, if we had the animal, we would return it. उन्होंने कहा, थर्ड मर्चेंट ने, अगर हमारे पास एनिमल होता तो हम वापस कर देते. But we do not have the animal. We are honest man, not thieves. उन्होंने कहा, थर्ड मर्चेंट ने,
कि अगर हमारे पास एनिमल होता तो हम वापस कर देते, हम क्यों रखते अपने पास। हम क्या है, ऑनेस्ट मैन है, हम चोर नहीं है, हम ईमानदार आदमी, हम ईमानदार लोग हैं। Then Raja said, then how do you know so much about the animal? राजा ने पूछा कि आप लोगों को एनिमल के बारे में कैसे पता। Then third merchant said that believe us Raja, we have not seen the animal, we only learned about the animal from his footprints. तो थर्ड मर्चेंट ने कहा, राजा जी हमारा विश्वास कीजिए, हमें नहीं पता कि एनिमल कैसा है, हमने नहीं देखा है एनिमल को, हमने सिर्फ उसके फुटप्रिंट्स देखे हैं, जिससे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, हमने सोचा कि कैसा हो सकता है वो एनिमल। ओके, शिक्षा, स्टॉप टचिंग द स्क्रीन, डू नॉट टच द स्क्रीन, स्क्रीन को टच मत करो प्लीज। राजा, हाउ कैन दैट बी? राजा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। Then first merchant is saying, you see my lord, I noticed footprint of animal on the muddy path. उसने कहा फर्स्ट मर्चेंट ने कि राजा जी मैंने देखा है कि जो एनिमल था उसके फुटप्रिंट्स मडी पाथ पे थे। मडी पाथ मीन बहुत पानी मिट्टी वाले कीचड़ वाली जगह पे है, उनके मडी पाथ थे उस एनिमल के। आई ऑब्जर्व दैट वन फुटप्रिंट वाज लाइटर देन द रेस्ट। उसने कहा कि मैंने ऑब्जर्व किया कि जो एक फुटप्रिंट था वो बहुत हल्का था और जो दूसरा फुटप्रिंट था वो बहुत अंदर तक गया था मड में। I knew that the camel had one weak leg. इससे मुझे पता चला कि कैमल का एक लेग जो है वो वीक है। Then second merchant said, I observed that the leaf of the trees were of the left side of the road were eaten. उसने कहा कि मैंने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ लेफ्ट साइड के जो रोड के लीफ थे सिर्फ उन्हीं को खाया गया है, सिर्फ उसी को उस एनिमल ने खाया है। Those on the right were untouched. राइट साइड के जो लीफ थे उसको तो उसने खाया ही नहीं है। Thus I knew that he couldn't see with his right eyes. So इससे मुझे पता चला कि वो अपनी राइट आईज से देख नहीं सकता है क्लियरली। That's why उसने सिर्फ लेफ्ट साइड के लीव्स को खाया है। Now third merchant said, I saw drops of blood on the road from small insects bites. मैंने देखा कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स ने उसको बाइट किया था जिसके कारण ब्लड के ड्रॉप्स पड़े हुए थे रोड में। So I knew that his tail was too short to chase away an insect. मुझसे मुझे पता चला कि उसकी जो टेल थी वो बहुत छोटी थी कि इंसेक्ट्स को हटा भी नहीं पा रही थी। Fourth merchant said, I saw that while his front feet were planted firmly on the ground, the hind feet had hardly touched it. Thus I guessed that they were contracted by pain in the camel's body. इससे मुझे पता चला कि उसकी बॉडी में कुछ पेन है क्योंकि वो प्रॉपरली अपनी बॉडी को जमीन पे नहीं रख पा रहा था, बहुत ऊपर ऊपर से हल्का हल्का चल रहा था, ठीक से नहीं चल रहा था। Then Raja, very impressed, Raja was impressed. These merchants are very wise. He said कि अरे ये मर्चेंट तो बहुत wise हैं, बहुत होशियार हैं। They have observed things around them and drawn conclusion. उन लोगों ने सब चीजें ऑब्जर्व की एंड वो एक कंक्लूजन पे पहुंच गए कि कैसा हो सकता है वो एनिमल। They are honest too, ये तो ईमानदार भी है। I am happy, I have such wise men in my kingdom. राजा ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे किंगडम में ऐसे वाइज मैन हैं, वाइज लोग हैं। As for you, I want you to be careful next time. I order you to go and look for your animal. मैन को राजा ने कहा कि जाओ जाके अपने एनिमल को ढूंढो और अब आगे से केयरफुल रहो, इस तरह से किसी के ऊपर एलिगेशंस नहीं लगाने हैं आपको। And you, I make you my ministers with the help I am going to rule the kingdom. राजा ने कहा अब फोर मर्चेंट्स थे, उनको बोला कि अब आप लोग मेरे मिनिस्टर्स बन जाइए, आपकी हेल्प से अब मैं किंगडम पर रूल करूंगा। This was the end of the story. Understand? I hope that you like the story. So we can understand that from this story that we all have to observe each and everything which is going on in our surrounding. This is important. So move to the exercise. This is the exercise which you all have to do by yourself. Understand? I will send you question and answers on your WhatsApp group. Okay, and tomorrow we'll complete the exercise of this chapter. So I hope that you understood the story, you understood the chapter, and tomorrow we'll meet and we'll complete the exercise. And I'll send you question and answers on your WhatsApp group. So students, that's all for today's class. We'll meet tomorrow. Good day.